Hi everyone, good evening and welcome to this session. Important events, general knowledge for CLAT 2024. Few days are left now, and as you remember, we started this series. And last week I did a session where I covered some of the important events, and today we continue with the second part in this series. So, what are we going to cover today as far as the important events for this year are concerned, which probably are very important from CLAT 2024 exam perspective? So, today we are going to cover very important five critical events, I would say, and some of them are really, really critical, actually, very, very important, I think, from an exam perspective. Might get coverage in CLAT. If not CLAT, then definitely you can expect questions in other examinations like AILET, which is immediately after CLAT, or maybe other entrances later in 2024. But these are very important events, बहुत ही important events हैं ये. And today we are going to talk about Israel-Palestine conflict, the ongoing war. We'll definitely cover that. We'll talk about World Heritage Sites. There is a reason for that. And we do know that there were two sites added this year from India, actually. So taking the total tally to 42. So we'll talk about all those aspects today. Very important judgment came in October about same-sex marriage. The case was there, the hearings were going on in the Honorable Supreme Court, and finally the judgment was pronounced, actually. So we'll look at all the aspects, we'll look at the chronology. Article 370, it's the fourth anniversary of the abolition of Article 370. We'll again look at the important timelines, the important events, the chronology about Article 370, and we'll try to understand how and what happened over a period of time. And nevertheless, we'll also talk about the Indus Water Treaty. Today, the point of contention between India and Pakistan. So there are issues related to the treaty, which these countries are trying to sort out. So we'll definitely look at that. And I'm sure you can hear the sound of the cracker right behind me. It's obviously आज छोटी दिवाली है, तो लोग celebrate कर रहे हैं. And of course, people should celebrate, but we do understand the exam is not very far, so that's the reason you are here today and I'm here today. So we'll definitely celebrate after the session, but right now we'll focus on the session and we'll be very, very attentive, and we are going to cover all these important events in very much detail today. So chalo, let's move ahead and start with the first event for the session, which is Israel-Palestine conflict. Now, we all do remember the fact that the Hamas carried out an attack in Israel on 7th of October 2023, and it is definitely one of the deadliest attacks as far as these two nations are concerned. And in retaliation, Israel has gone ahead with a war, and they are trying to make it very decisive, actually. But this is something which has not started all of a sudden. This has a history, decades of deadly conflicts between the two sides. इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट सालों से चला आ रहा है, decades से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है. So we'll look at the chronology over here and we'll try to understand what exactly happened earlier. पहले क्या क्या हुआ है, and how the two sides are at war, actually. So there are reasons behind that. So let's go back to 1917, where we are talking about the Balfour Declaration by the British government, actually in 1970. So we go back to 1917, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था नेशनल होम फॉर द ज्यूइश इन पैलेस्टाइन. सो जो ज्यूइश हैं, उनको ज्यूज हैं, उनको नेशनल होम देने के लिए पैलेस्टाइन में बात किया था. उस समय जो पैलेस्टाइन था वो ओटोमन एम्पायर के रूल के अंदर आता था. सो ओटोमन एम्पायर जो थे वो रूलर थे पैलेस्टाइन के. कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली कुछ ना किसी तरीके से रहा, बट 1947 फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने प्रपोज किया कि यूनाइटेड नेशन जो है should consider the future of Palestine. So they left it to United Nations to consider the future of Palestine.
which later adopted a resolution. So the United Nations later adopted a resolution to split Palestine into two different states, two independent states. एक तो Jewish state होगा और दूसरा अरब स्टेट होगा विद जेरूसलम अंडर यूएन ट्रस्टीशिप. तो जेरूसलम जो है उसको यूनाइटेड नेशन ने अपने ट्रस्ट के अंदर रखा, अपने ट्रस्टीशिप के अंदर रखा, और दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया पैलेस्टाइन को, जेविश स्टेट और अरब स्टेट को. 15 मई 1948 को इसराइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. तो इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और इसी समय इसराइल और अरब वॉर स्टार्ट हुआ, जिसमें 5 अरब स्टेट्स नेमली इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, they fought against Israel, against the creation of Israel as an independent state. तो 5 अरब स्टेट्स हैं, ये नाम याद रखना है, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया, who fought with Israel in 1948. लेकिन इसराइल को सारे फॉरेन पावर्स का बैकअप था. they ultimately won the war. और जो टेरिटरी थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप. आज सारा जो वॉर है दैट इज कंसंट्रेटेड इन गाजा स्ट्रिप. सो इस चीज को ध्यान में रखना कि 1948 में जो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो वॉर हुआ था, विच अल्टीमेटली इजराइल वॉन, उस समय टेरिटरी को 3 भाग में डिवाइड किया गया था. द एंटायर टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन बीइंग इजराइल, द सेकंड बीइंग वेस्ट बैंक एंड द थर्ड बीइंग गाजा स्ट्रिप. जो इजिप्ट और जॉर्डन है उनके पास गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल आया और वेस्ट बैंक का कंट्रोल आया, जॉर्डन के पास, इजिप्ट के पास गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल आया अंटिल 1967. अब गाजा स्ट्रिप पे जहां पे ये सारी कहानी हो रही है, द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट वेयर इट इज गोइंग ऑन, इजराइल इज बम्बार्डिंग गाजा स्ट्रिप एक्चुअली टू एलिमिनेट हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये गाजा स्ट्रिप है क्या? सो इट्स अ 140 स्क्वायर मिल स्ट्रिप ऑफ लैंड अलोंग मेडिटेरेनियन सी जो है उसके साइड में है. वन साइड सराउंडेड बाय इजराइल, वन साइड सराउंडेड बाय इजिप्ट. 1967 में 6 दिन का वॉर फिर से होता है. देयर इज अ 6-day वॉर व्हिच हैपेंस इन 1967 इन द मंथ ऑफ जून. उस समय इजराइल ने जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज थी, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा और सिनाई पेनिनसुला, और जो सीरियन टेरिटरी थी गोलान हाइट्स, उनको कैप्चर कर लिया. तो 6 दिन तक वॉर हुआ और इजराइल ने इन टेरिटरीज को कैप्चर किया. 1979 मार्च 2026 को फाइनली इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ व्हाइट हाउस में एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसपे ये डिसाइड हुआ कि इजराइल विल विथड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला. तो जो सीरियन जो सिनाई पेनिनसुला था उसमें इस ट्रीटी के बाद इजराइल ने विथड्रॉ कर लिया खुद को वहां से इन 1979. लेकिन दिसंबर 1987 में जो पैलेस्टीनियंस थे, जो वेस्ट बैंक में रह रहे थे, जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे, उन्होंने फर्स्ट रिवेलियन, जिसको इंतिफादा बोलते हैं, सो फर्स्ट रिवेलियन स्टार्ट किया अगेंस्ट इसराइल. और इसी समय मुस्लिम ब्रदरहुड मेंबर्स ने हमास को established किया. So Hamas was founded by Muslim Brotherhood members in 1987 in the month of December. So first rebellion जो uprising थी, जो पैलेस्टीनियंस ने जो अपराइजिंग की थी या रिबेलियन किया था अगेंस्ट इजराइल, दैट हैपेंड in 1987 in the month of December. That ended in 1993, and it is very important to remember these two names. उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे इज़ाक रबीन, जो and उस समय जो पीएलओ था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ के जो चीफ थे, लीडर थे यासर अराफात. इन दोनों ने 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स को साइन किया था. ऑस्लो एग्रीमेंट जो था, ऑस्लो अकॉर्ड, उसको साइन किया था, जिसमें पीएलओ जो था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को था, उसको रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया गया फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इजराइल्स राइट्स टू एग्जिस्ट इन पीस. तो 2 चीजें हुई ऑस्लो अकॉर्ड में. एक तो जो पीएलओ था, द ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय यासर अराफात, उसको पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिला और इजराइल को रिकॉग्निशन मिला टू एग्जिस्ट विद पीस एक्चुअली. लेकिन 2000 में, 7 साल बाद, 2000 में, ईयर 2000, सेकेंड रेबेलियन हुआ फ्रॉम पैलेस्टीनियन फोर्सेस व्हिच वेंट ऑन टिल 2005. So actually it ended in 2005.
जिसमें पैलेस्तीन ने वेस्ट बैंक और गाजा पे कंट्रोल पाया। सो ऑटोनोमस कंट्रोल हो गया वेस्ट बैंक और गाजा पे। 2005 में इसराइल ने खुद को गाजा स्ट्रिप से डिसंगेज कर लिया, जितने भी उसके सेटलमेंट से उनको हटा लिया। सो थिंग्स वे लुकिंग वेरी पॉजिटिव, काफी मतलब हद तक चीजें सामान्य होती हुई दिख रही थी। बट 2006 में जो हमास है उसने इलेक्शन जीता, जो गाजा स्ट्रिप का इलेक्शन था, और पीएलओ जो था उसको डिफीट किया, उनको बाहर किया। और 2007 में आर्म्ड टेक ओवर हुआ गाजा का बाय हमास, एंड दिस प्रॉम्प्टेड इजराइल टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन गाजा। सो यहां से फिर प्रॉब्लम एक बार दोबारा शुरू होता है इन 2007। So Israel from there on has been engaged with Hamas at different time intervals. Major अगर large scale military operations की बात करें तो 2008 में 22 डे ऑपरेशन चला था, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कास्ट लीड। 2008 के ऑपरेशन क्या आप बोलते हैं? ऑपरेशन कास्ट लीड। जो 2012 का ऑपरेशन था, जो मिलिट्री इंगेजमेंट था इसराइल का इन दी गाजा टेरिटरी अगेंस्ट हमास, दैट इज नोन एज पिलर ऑफ डिफेंस। ये 8 डे का ऑपरेशन था। एंड देन वी हैड प्रोटेक्टिव एज, द ऑपरेशन विच वाज लास्ट कैरिड आउट इन 2014, before what is going on right now. So that's all about, if you look at the history of the conflict between the two sides, Israel and Palestine. So ये पूरी chronology है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से शुरू होती है, और it's still continuing actually with no result in sight actually. So so the I think the in the current situation, it will take maybe a day, few days, maybe couple of months. I don't think immediate resolution is in sight as far as Israel Palestine conflict is concerned. And no doubt it is one of the major events in world politics and should definitely be understood from the exam perspective. तो इसको बहुत अच्छे से cover करो. All this data might be very, very important, very important from any exam perspective, basically. Let's move on and talk about World Heritage Sites. And why I have picked up World Heritage Sites, इसके पीछे एक रीजन है। 2023 में 2 sites ऐड हुए इंडिया में by UNESCO actually for the in the list of World Heritage Sites. So definitely this is very important. अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो साइट्स हैं जो कल्चरल या नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दे आर वेरी एक्सेप्शनल प्लेसेस, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी प्लेसेस एक्चुअली, और इट कुड हैव मिक्स्ड सिग्निफिकेंस एज वेल। तो जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। दे शोकेस आवर civilization to the remaining world, actually what we have contributed to the world. So when we are talking about World Heritage Sites India, we are talking about showcasing our contribution to the world civilization. Now as of now, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में we have a total of 42 heritage sites, जिसमें से जो 34 हेरिटेज साइट्स हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो हैं वो नेचुरल साइट्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हो गए, the national parks हो गए, so they are natural sites. And there is one site which is a mixed heritage actually. So I'll share all those names in due course of time. And if you look at the statistics across the world, actually, India stands at 6th position. India has the 6th largest number of World Heritage Sites recognized by UNESCO, actually. So, which are the other 5 nations? So, Italy has 59 and it leads the tally. So, Italy has a total of 59 World Heritage Sites, followed by China at 57. France and Germany both have 52. And definitely, so France and Germany both have 52 actually. इंडिया 6th पोजीशन है, 42 पे एक्चुअली अगर हम बात करें। मोस्ट सर्च हेरिटेज साइट कौन सा है? रिसेंटली इफ यू कम, आई एम श्योर यू हैव रेड अबाउट दिस, ताजमहल is one of the most searched UNESCO heritage sites across the world actually. Now if you look at from a geographical perspective, there are a total of 1119 world heritage sites recognized as of now. As we are speaking today, there are a total of 1100, one short of 1200. That's the total, including the cultural, natural, and mixed sites. The total number of cultural sites stands at 933 across the world,
Natural sites are 227, and there are 39 sites recognized as mixed heritage actually. Now, the pack is definitely led by Europe and North America with a total of 565 across the three categories. इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर एशिया और पैसिफिक आता है with 289, followed by Latin America and the Caribbean nations at 149, Africa contributing 103, and the Arab states contributing 93 heritage sites actually. So that's the statistics from the world perspective. Now let's look at the cultural sites, the cultural heritage sites of India. There are a total of 34 of them. 34 sites हैं जो cultural heritage sites हैं. जो first list हुआ था, the first which one was recognized was Red Fort of Agra basically in if I remember correctly in 1986. But state wise let's look at data. So बिहार में दो है, महाबोधि टेम्पल है गया में, बोध गया में, and नालंदा जो है, you know about the Nalanda University from the times of Chanakya. So जो archaeological site है, the Nalanda University was famous one point of time. So Bihar has two basically. Chandigarh has one. Delhi again has three heritage sites, cultural heritage sites, जिसमें हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार और उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उनको हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैटेगरी में डाला गया है. Goa also has the convents and the churches of Goa also classify as the cultural heritage sites of India. Gujarat has four basically. Then if you look at Rajasthan, we have one, Jaipur, Karnataka, though in fact the third one got added this year, and that's the ensembles of Hoysala temples basically. So Karnataka has three now, the latest edition coming from Hoysala basically. Madhya Pradesh also has three World Heritage Sites. Maharashtra contributes the maximum with five heritage sites. Odisha, we have the famous Sun Temple. Rajasthan, तीन हो गए total, including the Jaipur one. Tamil Nadu, two. Telangana, one. UP has three basically, but the first one came from UP, the Agra Fort, not the Red Fort, sorry. The Agra Fort, which was the first one to be listed from India basically. इस साल वेस्ट बंगाल से शांति निकेतन को ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अंडर द कल्चरल कैटेगरी बेसिकली. सो इन 2023 डोंट फॉरगेट द फैक्ट 2023 में इंडिया से दो कल्चरल हेरिटेज साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुए हैं. वन इज शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल. आई एम श्योर यू विल रिकॉल गुरु रविन्द्रनाथ को आप डेफिनेटली रिकॉल करोगे. शांति निकेतन की जब बात आती है तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, तो शांति निकेतन को ऐड किया गया है, और जो कर्नाटका के होयशाला टेम्पल्स हैं उनको ऐड किया गया है. इस बार दो ऐड हुए हैं बेसिकली. ठीक है. नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो हैं उसमें अपना असम जो है वो लीड करता है. वहां से दो नेचुरल साइट्स हैं. वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द अदर वन इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हिमाचल से ग्रेट हिमाचल है, और वेस्टर्न घाट विच स्प्रेड्स अक्रॉस फ्यू स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इको सेंसिटिव जोन भी है वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट इज अनदर नेचुरल साइट. Keoladev National Park from Rajasthan, Nanda Devi Uttarakhand, I'm sure you are familiar with these names, and Sundarbans in West Bengal. So these are the 7 natural heritage sites from India. और जो mixed site है वो है सिक्किम में नेशनल पार्क है खानचेंग दोंगा, वो सिक्किम में सिचुएटेड है. We have only one mixed heritage site. So very important data. You must do a little bit of research. थोड़ा याद कर लो इसको. The statistics should be known basically, okay, but the latest edition should also be known. अब मूव करते हैं to another historical event, and this is a verdict from the Honorable Supreme Court of India, which again came last month in the month of October, and this is about the arguments which were going on, and the verdict was reserved basically, which now they have delivered for the same-sex marriage cases which were there actually. So it was not just about one petition, there were multiple petitions actually which were filed in the Supreme Court of India.
The arguments happened quite earlier in the month of April, somewhere around April, actually, it started. And finally, the verdict came in the month of October, on 17th of October, I would say. So, जो 17th October को 5 judge bench जो था Supreme Court का, which was headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, they actually gave the verdict basically and ruled against legalizing the same-sex marriage actually. So setback to the queer community, but the judgment came from the Honorable Supreme Court, so it has to be accepted. Unanimously reject किया था. They would not legalize the same-sex marriage. जो bench था, apart from the Chief Justice himself, also comprised of judges, Justice Sanjay Kishan Kaul, S.K. Kaul, Ravindra Bhatt, Hima Kohli, and P.S. Narasimha. So it was a 5-judge bench. Actually, it was a constitutional bench. The bench also ruled in 3:2 verdict. दो judges against थे, दो judges favor, 3 judges against थे, 2 judges favor में थे, against civil unions for non-heterosexual couples. अब कौन से वो 2 judges थे जो फेवर में थे? That included Chief Justice of India and Justice Sanjay Kishan Kaul. They actually were in favor of civil unions for the non-heterosexual couples, but the other 3 judges did not agree to that, and as a result, we had a verdict which was 3:2. But the verdict was unanimous as far as legality of the same-sex marriage is concerned. वहां पे उन्होंने उसके against rule किया था. Now, जो argument था वो उसमें it had multiple aspects actually. So right to equality से लेकर right to privacy, legal privileges की बात हुई, rights bestowed upon by marriage उसकी बात हुई, the impact of same-sex marriage on children, all such arguments were covered during the proceedings basically. There were 3 parties opposing the same-sex marriage, and that includes obviously the central government, the government of India, the National Child Rights Body NCPCR, and the body of Islamic scholars Jamaat Ulema Hind. So Jamaat जो Ulema Hind body है Islamic scholars की, वो भी against थे. Again, they were the party against to the same-sex marriage. So these 3 groups were the opposing the petitioners basically. Now let's look at the chronology where it all starts actually. So let's go back to 25th of November 2022. एक साल पीछे जाते हैं. So this was the day when 2 same-sex couple, they approached the Supreme Court requesting the recognition of same-sex marriage under the framework of Special Marriage Act. Special Marriage Act जो है वो 1954 का है. तो इन्होंने डिमांड किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज करे सेम सेक्स मैरिज को अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. तो सुप्रीम कोर्ट obviously there was a petition made, so Supreme Court issued notices to the center and the Attorney General of India, who is the lawyer for the government of India, so the highest ranked lawyer for the government of India. Attorney General को notice issue हुआ, central government court notice issue हुआ by Supreme Court of India after this petition was submitted. 14 December 2022, कुछ दिनों के बाद, another same sex couple जिसमें एक इंडियन एक यूएस सिटीजन, they approached Supreme Court seeking their marriage recognition under foreign marriage act. तो उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं, बट जो अपने मैरिज का रिकॉग्निशन था, they seeked it under foreign marriage act actually basically. So what the court did, they consolidated all such cases where same sex couple were approaching the courts, different courts, and they scheduled a hearings on 13th of March 2023. 12th March को center, the government of India filed an affidavit opposing the validity of the same or the legal validity of the same sex marriage. So 13th March को hearing होनी थी. 12th March को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिटिशन फाइल कर दिया कि वी आर opposed to the legal validity of the same sex marriage. Now what Supreme Court did on 13th of March, they actually constituted a 5-judge constitutional bench और उन्होंने डायरेक्ट किया कि ये जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, when the hearing of this matter will be happening, that should be broadcasted live on this Supreme Court website as well as on the YouTube channel. 18th April को arguments start हुए, 11th May तक continue रहे, so almost for 20 days the arguments continued, and finally on 11th of May, court reserved its verdict, which was delivered on 17th of October 2023. So rest is history. The Supreme Court also mentioned
that it is up to the parliament to make laws. तो parliament चाहे तो law बना सकती है, giving legality to the same-sex marriage, but Supreme Court won't consider or won't give it a legal aspect. So that's all about this verdict, same-sex marriage. I hope the chronology is very, very clear. याद रहेंगे सारे information आपको, बिल्कुल ध्यान से आपने सुना है. Let's move on to a very important one, which is Article 370, as we are witnessing the fourth anniversary of the abolition of Article 317. 2019 में abolish किया गया था 370 को. So we'll also look at the chronology, and this is going to be a longer one. I'm going to share a lot of data, lot of information. So I think next few minutes, you should definitely pay attention. So सबसे पहले we go back to 1947. 1947 में when India got independent on 15th of August 1947, history में जाते हैं और वहां से पूरी कहानी शुरू होती है. So 26th October 1947 को जो उस समय रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, उस समय जो रूलर थे वहां के महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, which was about acceding to the dominion of India. तो उस समय इंडिया was not a republic, we all know, so we were called a dominion basically. So रिपब्लिक तो हम 1950 में हुए थे. So महाराजा हरि सिंह जो उस समय रूलर थे, उन्होंने साइन किया, इस एग्रीमेंट को साइन किया, which is known as instrument of accession. Don't forget this this name, instrument of accession, which according to which Jammu and Kashmir became part of India actually. So now Pakistan में था ना इंडिया में था, finally it became part of India. इसमें क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एक चीज क्लियर था कि the parliament will govern only 3 subjects, which means India will have control of only 3 subjects, which included foreign affairs, which included defense and communications. बाकी सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, वो जम्मू एंड कश्मीर के कंट्रोल में रहेगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द पार्लियामेंट विल हैव लिमिट्स टू फॉरेन अफेयर्स डीलिंग्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस ओनली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पावर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. 26 जनवरी 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट केम इनटू फोर्स. इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक एंड देन आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 370 है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर आर 3 ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स. उस समय जो आर्टिकल 370 था उसके 3 ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स थे. पहला था कि इंडिया विल नॉट मेक लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर आउटसाइड द स्कोप सेट आउट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. अब उसमें क्या था? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन. सो इसके बियॉन्ड जाकर के the government of India or the parliament will not make laws for any laws in relation to Jammu and Kashmir without the concurrence of the government. Government को consult या उनकी रजामंदी के बिना इंडियन गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती थी which would be applicable to Jammu and Kashmir. इसके अलावा द सेकेंड फ्रेमवर्क जो था, जो सेकेंड एस्पेक्ट है, एक्सेप्ट आर्टिकल 1 which declared India as a union of states, and Article 370, no part of the Constitution would apply to Jammu and Kashmir. इसका मतलब ये है कि under Article 370 only Article 1, जिसका मतलब है India is a union of states, वो अप्लाई होगा, और इसके अलावा 370 होगा. 370 के बियॉन्ड नो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. President can make provisions to apply with modifications exception, but उसको गवर्नमेंट जो था, स्टेट गवर्नमेंट जो थी, उसके साथ कंसल्ट करना होता. ठीक है. The third aspect, Article 3 itself could not be amended or repealed. उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है unless the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir consented to it. तो आर्टिकल 370 को अमेंड नहीं किया जा सकता, रिपील नहीं किया जा सकता जब तक जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उसको एग्री ना कर ले. ठीक है. सो दिस वाज द ब्रॉडर, these 3 were the broader framework.
of Article 370. So finally, first order was issued by the President of India, which is also known as Application to Jammu and Kashmir Order 1950 अंडर आर्टिकल 370, जिसमें सारे स्कोप्स को डिफाइन किया गया और शेड्यूल 2 का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, जिसमें जो भी प्रोविजंस मॉडिफाई हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे वो अप्लाई होंगे स्टेट पे. Now we come to 1951. 1951 में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है and it was represented by 75 members belonging to the National Conference led by Prime Minister of Jammu and Kashmir, Sheikh Abdullah, then Prime Minister of Jammu and Kashmir. Now you must be wondering, Prime Minister, Jammu and Kashmir was a state. So how can a state have a Prime Minister? Please remember, the first general elections were held in 1952. Okay. उसके पहले स्टेट्स के जो चीफ्स होते थे, नाउ वी नो देम एज चीफ मिनिस्टर, दे वर अर्लियर नोन एज प्राइम मिनिस्टर्स ओनली. So we had Prime Minister of Bihar, we had Prime Minister of UP. So whichever states which were there, they all had prime ministers and not chief ministers. That was the nomenclature used for the head of state at that point of time till 1952. 1952 के बाद we had chief ministers basically. So उस समय के प्राइम मिनिस्टर, and this could be an interesting fact you should remember actually. So जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के फादर, उमर अब्दुल्ला के फादर फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला. So these 75 member met, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन होता है 1951 31 अक्टूबर को. 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब इस एग्रीमेंट के अंदर जो थे रेसिडुअल पावर्स थे, जो रेसिडुअरी पावर्स थे, वो जो आर्टिकल 248 के अंदर विच कुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, वो आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट का क्या है? कंकरेंट लिस्ट जो है, वी डू नो, एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक आपका स्टेट लिस्ट होता है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है. टिपिकली जो यूनियन पार्लियामेंट होता है उसके पास बाकी स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर की बात हटा देते हैं, तो यूनियन पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस ऑल रेसिडुअरी पावर्स इन अदर स्टेट्स. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट. बट यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट थी. 1954 आते हैं, 15 मई 1954. 1954 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद once again issued an order, which is presidential order, to implement the terms agreed in the Delhi Agreement of 1952. So जो दिल्ली एग्रीमेंट था उसके जो भी टर्म्स थे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होता है और उसके तहत टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोवाइड किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को, और आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस होता है. रिमेंबर दिस, 1954 में आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस होता है which conferred special rights to permanent citizens of Jammu and Kashmir. So it was not Article 370 but Article 35A which actually conferred that special rights to the people, to the permanent citizens of the state of Jammu and Kashmir. Moving on to 1956, 17th November 1956, जो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट होता है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है. डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट. ऑन 17 नवंबर the constituent 17 November 1956 constituent assembly of Jammu and Kashmir is dissolved after the declaration which stated the state of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. So far so good. There are a lot of case references over here. 1959 Premnath Kaul versus Union of India. Supreme Court ने highlight किया, क्या highlight किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, फाइनल डिसीजन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अंडर आर्टिकल 3 उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया. ठीक है, सो इस जो केस था इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करते हैं, बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट 1950, उसके ऊपर केस था ये सारा कुछ. 1962 Puran Lal Lakhanpal versus the President of India. When we are saying the President of India, obviously government of India. A presidential order allowed Jammu and Kashmir to be represented in Lok Sabha through indirect election. While other states had direct election, Jammu and Kashmir को का जो representation था वो indirect elections के through था. Order
जो था उसको उसने जो आर्टिकल 81 था उसको मॉडिफाई किया एंड टू एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर. सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, स्टेटिंग दैट वर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 शुड बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू इवन इंक्लूड एन अमेंडमेंट. 1968 में जो केस था संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट हियर dealt with the constitutional validity of two presidential order extending the application of article 35C in Jammu and Kashmir. थोड़ा लीगल है, बट you should just remember the important aspects over here actually. So इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 370 would continue to exist even after the assembly dissolution. So जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसोल्यूशन हो गया उससे 370 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 will continue to exist. इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 370 जो है वो परमानेंट स्टेटस मिल गया उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन में, डिस्पाइट द एबोलिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1972 में मकबूल दामनू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर केस है. इसमें प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया विच मॉडिफाइड आर्टिकल 367 एक्चुअली. ठीक है, तो उसमें सदर रियासत चेंज करके गवर्नर बोला गया बेसिकली. इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया. जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वैलिडिटी थी उसको अपहेल्ड कर दिया. अब आते हैं सीधा 2016 में. The story will change from here actually. So यहाँ पे which is the case reference State Bank of India versus संतोष गुप्ता, इसमें सुप्रीम कोर्ट पास एक चैलेंज आया था अगेंस्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. ये यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन था. इसको एड्रेस करना था सुप्रीम कोर्ट को, इसकी लीगैलिटी को एड्रेस करना था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन लेजिस्लेशन के फेवर में जजमेंट दिया. दे अपहेल्ड द यूनियन लेजिस्लेशन. सो उसके हिसाब से क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो डेफिनेटिव टाइमलाइन मेंशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 370. 20 जून 2018 भारतीय जनता पार्टी विथड्रॉस इट्स सपोर्ट टू पीडीपी. महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट थी, पीडीपी लेड पीडीपी गवर्नमेंट थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था. भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट पीछे लिया एंड द पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हैपेंड एंड फाइनली गवर्नर्स रूल वाज इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इन 2019 ऑन 5th of August जो प्रेसिडेंट थे उस समय रामनाथ कोविंद, ही इश्यूड एन ऑर्डर amending the interpretation of the Constitution Assembly to Legislative Assembly. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको अमेंड किया गया, जो टर्म था उसको अमेंड करके लेजिस्लेटिव असेंबली किया गया और उसके लिए आर्टिकल 367 को अमेंड किया गया. उसका जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज था वो चेंज किया गया. नाउ सेम डे राज्यसभा ने जो रेजोल्यूशन था रिगार्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उसको पास कर दिया along with Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. नेक्स्ट डे लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, which was already approved by राज्यसभा earlier actually. And finally, President Ramnath Kovind, उस समय the then President of India, signed the order rendering Article 370 redundant and removing the special status which was granted to Jammu and Kashmir. So 5th August 2019 को आर्टिकल 370 कंप्लीटली अबॉलिश हो गया, उसको एब्रोगेट कर दिया गया एंड विच टुक अवे द स्पेशल स्टेटस व्हिच वाज अर्लियर ग्रांटेड अंडर दिस आर्टिकल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. 9th अगस्त 2019 यूनियन पार्लियामेंट ने कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पास किया, which split the state in two union territories, number one being Jammu and Kashmir and the other one being Ladakh. जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा बट लद्दाख में नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. So please remember this fact: Jammu and Kashmir has a legislative assembly, but Ladakh does not have one basically. Okay. अब मूव करते हैं
सेम मंथ 28 अगस्त 2019। अब यहाँ पे उस समय, अभी तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, बट उस समय जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उसके पहले बोबडे थे, और अब्दुल नजीर, जस्टिस अब्दुल नजीर, 3 जज बेंच था। दे स्टार्टेड हियरिंग आर्गुमेंट्स on the constitutionality of the order. Which order? Abolition of Article 370. 2 दिन आर्गुमेंट चलता है, एंड देन बेंच refers to a constitutional bench, उसको 5 जज बेंच को रेफर कर दिया जाता है। 2020 in Sa Faisal versus Union of India, 5 judge bench which is led by Justice M.B. Ramanna along with Justice S.K. Kaul, R. Subhas Reddy, B.R. Gawai and Suryakant, they refused to refer to a case to a further larger bench actually. जो पेटिशनर का यहाँ पे व्यू था कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट between the rulings in the earlier cases actually, but the court refused actually. On 3rd July 2023, Supreme Court assigned the challenge, this abrogation of 370 to a new constitution bench, now which is being headed by our current Chief Justice D.Y. Chandrachud, along with Justice S.K. Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gawai and Suryakant. तो पुराने जजेस संजीव एस.के. कौल, B.R. गवई और सूर्यकांत हैं, but now there are 2 new judges in this bench, which is the current Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice Sri Krishna Kaul. So these are the people who are part of the 5 judge bench, the constitution bench basically. 2nd August को hearing start हुई है around the 22 petitions which challenge the abolition or abrogation of Article 370. Moving on to our last event for the day, which is Indus Water Treaty, another contentious issue between India and Pakistan, our neighbor. And so let's look at the chronology. Issue है क्या, Indus Water Treaty है क्या, इसके अलावा ये issue क्यों suddenly उठा है फिर से एक बार. So we should look at the history of the Indus Water Treaty as well. Now, abhi kya hua? All of a sudden, what happened? India issued a notice to Pakistan seeking a review and modification of the Indus Water Treaty. First, Pakistan is not helping in resolving the disputes over the Kishan Ganga and Ratle. Ratle जो है वो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स हैं, किशन गंगा एंड रत्ले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स. रातले जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर है, बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर. सो इंडिया साइटेड Pakistan's intransigence in resolving the dispute basically. So India issued a notice to our neighbor basically. So this notice was basically sent after the contravention of the Article 9 of the Indus Water Treaty. Let's look at the recent events actually. Now 2015 में Pakistan actually asked for an appointment of a neutral expert. कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाए which will handle the technical objections to these 2 projects which Pakistan had raised actually. All of a sudden, Pakistan on its own unilaterally actually retracted this request and then proposed कि इसकी जगह पे court of arbitration होना चाहिए. So that should adjudicate this to its objection basically. So first, Pakistan demanded appointment of a neutral expert and then took back its request and said कि नहीं, इसकी जगह पे court of arbitration होना चाहिए. In August 2016, Pakistan approached World Bank, which was party to this treaty basically. So World Bank को approach करता है Pakistan seeking a court of arbitration. Same time, India moved a separate application asking for appointment of a neutral expert. So इंडिया का आर्गुमेंट ये था कि पाकिस्तान का जो रिक्वेस्ट है फॉर अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दैट इज वायलेटिंग द ग्रेडेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द treaty which is already in place. Dispute resolution mechanism is already identified under the Indus Water Treaty. So जो पाकिस्तान का रिक्वेस्ट है वो उसको वायलेट करता है. In March 2022, the World Bank decides to resume appointment of a neutral expert as well as chairman for the court of arbitration. हिस्ट्री में जाते हैं. 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है which was done after 9 years of negotiation. So all of a sudden nahi hota, it was after 9 years of negotiation. In September 1960, both the countries signed the Indus Water Treaty and
the other signatory being the World Bank itself. Now, what this treaty is all about? This treaty actually sets a mechanism of cooperation, exchange between the two countries on how the water of Indus River and its five tributaries will be utilized. Which are the five tributaries of Indus River? Satluj, Vyas, Ravi, Jhelum, and Chenab. इन जो ये जो छह रिवर्स हैं, इंडस, सतलज, बीस, रवि, झेलम एंड चिनाब, इनका जो पानी है वो किस तरीके से शेयर होगा बिटवीन द टू नेशंस, दैट इज व्हाट इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑल अबाउट. Now, what this treaty did was it allocated the three western rivers. Western rivers जो हैं पश्चिम साइड में जो हैं, इंदस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान को allocate किए गए for unrestricted use with some exceptions कि agriculture, domestic use के लिए इंडिया. So 80% of the water went to Pakistan and 20% of water was for use by India. Ravi, Vyas or Satluj, these three were allocated to India for unrestricted uses. So three rivers with 80% share of water going to Pakistan and three to India with 20% of the water to be used by India. The Indus Water Treaty also has a mechanism to establish a permanent Indus Commission, जिसमें permanent commissioners होंगे दोनों साइड से, and they have to meet once a year basically. Now, the current contention, the current issue is about the two hydropower projects. One is Kishan Ganga, the other one is Ratle, which is on Chenab River. और ये दोनों projects जम्मू एंड कश्मीर में है. व्हाट इज किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है ये बांदीपुर जो जम्मू कश्मीर में है उससे 5 किलोमीटर नॉर्थ में है. इट्स अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट and it includes a 37-meter dam, tall concrete dam, and which will divert water from Kishan Ganga River through a tunnel to a power plant in Jhelum River Basin. तो जो किशन गंगा रिवर है उसका जो पानी है उसको एक टनल के थ्रू पावर प्लांट में भेजा जाएगा जो जो झेलम नदी है उसके बेसिन में जो बना हुआ है ना, जहां पे हो रहा है. जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 330 मेगावाट और इसका कंस्ट्रक्शन 2007 में स्टार्ट हो चुका है. नाउ Pakistan has objected to this, that this will affect the flow of Kishan Ganga River to Pakistan, and this what is the name of Kishan Ganga River in Pakistan? In Pakistan, it becomes Neelam River. ठीक है, so पाकिस्तान में किशन गंगा का नाम नीलम हो जाता है. 2013, the Hague's Permanent Court of Arbitration ruled that India could divert all the water with certain conditions. So 2007 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन आता है, बट 2013 की अगर हम बात करें तो परमानेंट का जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में वो इंडिया के फेवर में इसको जजमेंट देता है. सो that would be all for today evening, I would say, and so I think we have covered rather I would say 5 critical events basically. अगर हम आज बात करें तो we have covered very important critical events, और you must revise, you must practice all these events actually. जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, that would be really really helpful for you guys, and obviously keep on revising. I'll come back with another session, but we'll continue to cover more and more events actually before the examination. Your revision will continue to happen. Today being Choti Diwali, I'll not take much more time, in fact, and definitely I'll take this opportunity to wish you all and your family members a very happy Diwali and all the best. Keep working hard and you'll definitely have success in the CLAT and other examinations. Thank you so much. Good night and happy Diwali.